Hey guys, this is Urvashi and welcome back to my channel. And if you are new to my channel, don't forget to subscribe to my channel and ring that bell icon so that you get notified every time there's a new video for you. So lately it was my birthday and the festive season अभी आया है तो हर जगह Nykaa, Myntra, Amazon, everywhere there is huge sale and I got a lot of stuffs from these sales. So मुझे खुद haul videos देखना बहुत पसंद है. So I thought why not make one when I have a lot of things this time. So it has got both skincare as well as makeup as well as कुछ चीजें that we generally require in our life. So now without any further ado, let's get into the video. So the first product that I have from skincare range is Good Vibes का peppermint, raspberry and peppermint face scrub, and I will show. But first of all, look at the packaging. It is such a good, मतलब बहुत अच्छा सा royal packaging, golden cap and all, and the product inside. It's a very creamy sort of scrub, and it has got a very fruity, sweet smell. मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ and I'm gonna review some of these products जो मुझे सच में अच्छे लगते हैं. मैं उनको रिव्यू करके एक I will put up a new video for you guys. But yeah, I'm looking forward to this, the raspberry and peppermint scrub, because मुझे lately अभी ना ये बहुत सारी berry flavors like raspberries, cranberries, all these berry flavor चीजें मुझे बहुत attract कर रही है. So only I got this and इसके इतने सारे variants हैं पर्पल पे. I will mention the link in the description box जो भी मैंने ऑनलाइन खरीदा है. So yeah, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं. You can try any of the variant. ये मेरा पर्सनली बहुत मन था लेने का because कभी मैंने पर्पल से कुछ खरीदा था and I got यही raspberry and peppermint का एक छोटा सा ट्यूब for me to try and I loved it. So I ordered this. So yeah, I will use it and review this in some of my video. So the next thing I got in skincare again is from Good Vibes Tea Tree Intense Hydration Body Lotion. This comes in this pump bottle and it has a great smell. It has a good soothing smell and it retails for 155 and आपको पर्पल में मतलब गुड वाइब के प्रोडक्ट्स हमेशा किसी ना किसी डिस्काउंट पे मिल जाएंगे. सो एज इट इज दे आर वेरी अफोर्डेबल. उसके बाद उन पे देयर यू गेट अ लॉट ऑफ डिस्काउंट्स, सो काफी अफोर्डेबल हो जाता है. सो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द अफोर्डेबल रेंज. सो दिस वन इज रियली ग्रेट. मतलब इट इज गुड फॉर हाइड्रेशन एंड इट वो मतलब बिल्कुल भी ग्रीजी, आई हैव अप्लाइड इट हियर, बिल्कुल भी ग्रीजी वो नहीं देता है. इट जस्ट डिसॉल्व्स आराम से स्किन पे एंड गिव्स अ गुड हाइड्रेशन. Next up I have again a skincare product from Good Vibes is this. This is their lip scrub in the flavor lemon and this baby right here is one of my favorite because जब से आया है मैं I was not into lip scrubbing and all, but ये इतना trend में है इस time lip scrub like everywhere. So I wanted to try this. एंड मुझे बहुत ज्यादा चैप्ड लिप्स एंड ऑल की प्रॉब्लम थी. सो जैसे ये दिस अराइव्ड आई हैव यूज्ड इट एंड आई टेल यू दिस प्रोडक्ट इज रियली गुड. मतलब दिस इज सो इनएक्सपेंसिव. इसकी मतलब द पैकेजिंग इज गुड बट इसमें पैकेजिंग में कुछ लिखा नहीं. दिस कम्स इन अ कार्टन जो फेंक दिया मैंने शायद. बट या आई विल मेंशन द लिंक इन द प्राइस हियर और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. But this product is really good. You can try this if you have any like. This will instantly make your lip, very soft and pinkish. I love this product. This is I'll show you. This is like this, a sugar-based lip scrub, and this is really good. You can try this. मतलब मेरे कहने पे try करके देख सकते हैं. The next thing from skincare again is Green Leaf का aloe vera gel. मतलब it is the best aloe vera gel I have used till now. मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो जो एलोवेरा जेल होते हैं ना जिसको लगाने के बाद बहुत स्टिकी फील होता है. दिस वन राइट हियर हैज अ ग्रेट स्मेल एंड वो बहुत ही अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब होने के बाद एक मैट लुक देता है. मतलब आई यूज दिस एवरी डे. लाइक आई यूज दिस एवरी डे व्हेन आई एम एट होम. मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आई put this, मुझे वो जो स्मेल से इतना सूदिंग फील होता है. So this aloe vera gel is very good. The next stuff I have from skincare is from Nykaa.
This is Go for Glow, their peel off mask, Go for Glow, in the variant Spotlight Bright. And do follow me on Instagram because I review small things there. जैसे मैंने इसको review किया था वहाँ पे when the first time I was using it, and it was a big flop. Like this retails for rupees 800, I guess, 799. This retails for rupees 799, but this product is complete fail. मतलब this is the tube, and you get a small spatula sort of brush, silicone brush into it. Again, this is of no use. No use, you have to use your fingers. This product claims to give you a shine like a diamond with Nykaa Go for Peel Off Mask in Spotlight Bright, consisting of radiance boosting complex, lemon extract and vitamin B with mask, provides instant whatever. This does nothing to your skin, like nothing. कुछ भी नहीं होगा. मतलब हाँ, अगर आपको फोटोज लेनी है अच्छी सी इंस्टाग्राम के लिए, वो सिल्वर मुंह पे लगा के, then you can invest 800 on this. Otherwise, this is a complete no. इसे मत खरीदना. मतलब कुछ नहीं है इसमें. And I doubt Nykaa का स्किन केयर. The next I have is I don't know, this is skincare or makeup. मतलब it's not even makeup, it's not even skincare, but I like this product. Is this is Plum का green tea revitalizing face mist, and I wish मैं इस स्मेल आप लोगों को सुना सकती because this is very good. मैं एक्चुअली फेस मिस्ट लेना चाह रही थी बिकॉज जब मैं कॉलेज जाती हूँ एट द एंड ऑफ द डे, वो 7-8 घंटे की कॉलेज इंटायर क्लासेस के बाद मेरा फेस ऐसे गंदा सा हो जाता है. अगर मुझे कहीं जाना पड़ा तो मैं बहुत ही टायर्ड दिखती हूँ, बट दिस वन राइट हियर डज द जॉब परफेक्टली. मतलब ऐसे बहुत इंस्टेंटली अच्छा फील हो जाता है. नेक्स्ट वी मूव ऑन. वन मोर प्रोडक्ट वी हैव गुड वाइब का ऑलिव कोल्ड प्रेस्ड ऑयल. मैंने इसे अभी खोला नहीं है, बट डेफिनेटली आई एम गोना ट्राई इट ऑन माय हेयर, क्योंकि मेरे बाल मतलब थोड़े थिक हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, सो वी रिक्वायर गुड ऑयलिंग एंड ऑल. सो आई विल बी यूजिंग दिस और मैं रिव्यू करूंगी कि कैसा है, बट कोल्ड प्रेस्ड है तो अच्छा ही होगा. गुड वाइब्स ऑलिव कोल्ड प्रेस्ड ऑयल. एंड लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, I have sheet mask from Garnier. मैंने actually 3 मंगाए थे. One was charcoal, one was lemon, and then this is Sakura white, जो मैंने 2 यूज कर लिए. मैंने ये लेमन वाला अपने बर्थडे पे यूज कर लिया. I was vlogging that day, you know, and my day went really bad. तो मैंने vlog आधे में बंद कर दिया. मतलब it is the worst birthday of my life. I did not meet anyone, I did not go anywhere, I did not do anything except using a sheet mask. But I love these sheet masks from Garnier. मैंने अभी तक शायद कोई और sheet mask try भी नहीं किया है, but I'm in love with these sheet masks. So next up we move towards the makeup. The first thing is NY Bay Runway Foundation Concealer Contour Color Corrector Stick. मतलब it is everything. And this one you can see, मतलब this is the box in which it comes, and this is the stick. Like good stick. I got this in the shade. Where's the shade mentioned? Shade. Okay, so it is in the shade 9, Backstage Changes in Sand. So I have not tried it yet. मैं इसे use करूँगी and I will review it. So this was थोड़ा सा, you know, it retails for 175 and मुझे भी इस पे भी कुछ discount मिला था. So I will surely use this and let you know कि how it works in the affordable range of makeup. The next stuff I have is from Stay Quirky Hide My Hickey concealer sticks, and look at this cute packaging, chotu sa. Also the name is very cute. And this small stick
like, and ये टूट गया है शायद. And this is the stick, and it is. It is a good, actually good concealer type of thing. But हाँ मैं इसको use करूँगी, and then I will literally let you know कि the coverage कैसा है, how is it, blend करने में all कैसा है ये. And yeah, I will let you know about these products जो मैंने अभी तक use नहीं किए हैं. Next up I have Nykaa Rock the Line Jet Black Kajal. मेरा काजल खत्म हो रहा था, and I am using this since a very long time, so I ordered this again. The next up I have is 2 lip products. One is our प्यारा सा cute सा school life की fantasy वाला baby lip, and ये वो pink, it's in the variant cherry, candy now cherry. इसका एक प्यारा सा pinkish सा, you know, it has a tint and I love the smell. मतलब खाने का मन करता है. This is very good. अब तो ये मास्क के नीचे यही हो चुका है to go. Most of the time I don't feel like wearing anything, but mask के अंदर this one I'll be wearing. But then I don't know, for some reasons I don't like the lip balms वो box वाले when you have to put your finger and apply it, because वो पता नहीं मेरे लिए थोड़ा inconvenient हो जाता है. So I love these stick वाला lip balms. Next up I have a lipstick from Maybelline Super Stay Matte Ink. This one is in the shade 15 Lover. 15 Lover, and this is a lipstick that I'm wearing right now on my lips. I've mixed it with some Nykaa का दूसरा lipstick, but this one is a very cute, subtle, nudish type of lipstick. मतलब you can wear this lipstick daily when आप काम पे जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, या फिर बहुत ही डे टाइप की लिपस्टिक है. I loved the shade, and the best part about this shade, this lipstick is, man, it super stays. I'm gonna swatch it for you guys. So this is the swatch. It's a very cute pinky nude, मतलब बहुत अच्छे से settle होती है, and it takes थोड़ा सा time to settle on your lips, and once it settles, also it has got a very good smell. Once it settles, this lipstick like goes on and on and on and on for hours. मतलब आप खाना खा लो, कुछ भी कर लो. मतलब I have done this. मतलब I was trying to see how long will this stay, and this lipstick actually stayed for 16 hours. मैं खाना खा चुकी, सो चुकी, I've done everything. मैं बाहर से घर आ गई, मतलब सब कुछ कर लिया. This one right here is very 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 good. अगर आपको कोई दिक्कत है ट्रांसफर होने की, छूट जाने की, या कोई भी, just try this. And मुझे ये 50% ऑफ मिली थी. Next up I have is this. Okay, this is LA Girl Pro Conceal Color Corrector in the shade Orange. And this is like this. इसके आगे ऐसे एक ब्रश टाइप का होता है, and again I'm gonna swatch it for you guys. बेसिकली अगर आपको मेरे तरह डार्क सर्कल्स है, या फिर ये रीजन बहुत डार्क सा है, यू हैव अ लॉट ऑफ ब्लेमिशेस, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम पूरा फेस का बेस रेडी कर लेते हैं मेकअप में, एंड वो पोर्शन ग्रे बहुत पैची डार्क दिखता है, डार्क सर्कल्स कवर नहीं होते. दिस वन राइट हियर इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट. मतलब मार्केट में बहुत सारे कलर करेक्टर्स हैं, बट दिस वन रियली आई लाइक लव्ड इट. मतलब मैंने फर्स्ट टाइम कलर करेक्टर लिया है, यूज किया है, तो दिस कलर करेक्टर राइट हियर इज रियली ग्रेट, एंड मुझे सच्ची में बहुत यूजफुल लगा. इट रिटेल्स फॉर अराउंड 700 or 800. I will mention the amount नीचे, but I got this also on discount. But yeah, this one right here is very good. मतलब आप LA Girl की वैसे भी it's known for all the concealers, इसके सारे concealers इतने अच्छे हैं. They have like many options in color corrector also. But मुझे basically problem थी darkness and you know black patches और under eye में. So I got this one, and this one really does the job very well. I can feel my makeup today is
kind of good. मतलब I cannot say कि मैं makeup में expert हूँ, but I'm loving my makeup today. I've done this sort of अलग type का थोड़ा fun makeup, थोड़ा nude, purplish, pinkish. Wait, you can see I love it. I'm sorry I'm not wearing lenses अभी तो, so चश्मा. But this one you can try. मतलब इसका review मैं अभी दे रही हूँ. It's really good. Now next up I have is this. ये Maybelline the Hyper Curl Waterproof Mascara. मेरे पास मतलब I am a big fan of mascara क्योंकि मैं falsies नहीं पहनती and I have good thick लंबी eyelashes, तो मैं उनको थोड़ा enhance करने के लिए I am a fan of mascara. मतलब मैं घर से बाहर they ask me कि which one thing you will not avoid going out, तो that will be mascara for me. मैं हमेशा mascara लगा लेती हूँ because I love when people like तुम्हारी eyelashes ये real है या fake? So these are real eyelashes and उनको enhance करते हैं mascara. So I had Maybelline का already I was using Maybelline only, but वो waterproof नहीं था, तो every time I used to cry or anything वो पूरा बह जाता था. So I got this and I just love the packaging, this rose gold and black vibe, and the wand. It's a good curl wand. So ये आपको volume अच्छा देता है, as well as you know it's good. I have tried it just once, but I will try it more and let you know कि दोनों में अंतर क्या है exactly जो मैं पहले यूज कर रही थी और जो अब यूज कर रही हूँ. Next up I have few products that I got from ऐसे local market से. I went to commercial and I got them from a store. So this is a highlighter. It's in two shades. One is थोड़ा white, what do you say, थोड़ा champagne type का, and the other is more in the darkish tone. But मैंने ये दोनों क्यों खरीदे? I already had. I'm a fan of highlighter, but I already had one or two highlighters. But I got this. मतलब ये literally I'll show you. Both of them are just so good. So I got this and I am using this like a lot these days. I am using these only nowadays. So I'm wearing this one today, this one today. The next I got is मेरा actually क्या हुआ था, मेरा घर पे, मैं अभी घर पे थी, तो मेरा ब्लश टूट गया था. कैसे गिर गया था, अपने आप टूट गया था, तो मैं उसको लेके भी नहीं आई वापस. So I needed a blush because again cute लगने के लिए. So I got this. मतलब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रश भी था. Yeah, this is the brush that was inside, and these are the 4 shades that I get. And I tell you, they are so pigmented. I'm gonna swatch it and show it to you. You can see all the 4 shades. They are so good blushes to use, and matlab they were really great. The reason I could not resist, I bought these, and matlab 4 shade I get, and they had a very good price. Next is something really great. Actually I did not buy this. I got this, मेरा birthday gift था ये, और मैंने थोड़ा खराब भी कर दिया. This is an eyeshadow palette from Morphe. Look at the amount of colors I can play with, and it had a film over जिसमें सारे नाम लिखे हुए थे. This one I got as a gift for my birthday. One of my friend gifted me, and ये थोड़ा मुझसे गिर गया, मतलब थोड़ा damage हो गया यहाँ पे. But it has got very cute colors like pink, red, purple. I have created this eye look today using this palette. And it is a great palette, and thank you so much. Next up I have some tools. I got these mermaid wale brushes from Amazon. मुझे try करने का मन था, and I needed eye brushes also.
So these are, अभी तक तो they are working great. आगे देखती हूँ क्या होता है, मतलब शायद ये थोड़े क्वालिटी इनकी इतनी अच्छी नहीं है, but I will do let you know कि ये कैसे हैं. Then I have this brush that I got it from Amazon. Again, this is a very dense brush. I love this brush. And then I ordered these Tinkle face razors from Purple. अब मुझे फेस शेविंग भी ट्राई करने का मन था बिकॉज मेरे को नहीं, I feel so lazy going to the parlor and getting my upper lips and all done. So I got these face razors and I tried it. थोड़ा एक्सपीरियंस ठीक ठीक था, कट गया यार for the first time. Let's see how it goes आगे. I will tell me if you want me to make a video on face shaving. And I got 3 in this, मतलब एक पैकेट में 3 थे. And they were pretty good. The last 2 things that are left and I'll be showing you now are, for the first time in my life I'll be using them. First is Makeup Fixer Natural. It's a makeup fixing setting spray, a makeup setting spray from Swiss Beauty. It has aloe vera and vitamin E. Because yaar, it comes in this bottle sort of thing. मेरे को आई लव डूइंग मेकअप एंड मैं एक्चुअली क्या होता है कि हम मेकअप के बाद ना हमारा फेस बहुत पाउडरी दिखता है, बहुत केकी. सो आई वांटेड दिस सो दैट आई हैव अ वेरी ड्यूई सा, मतलब एक अच्छा सा मॉइस्ट नेचुरल ग्लो के लिए. सो आई विल ट्राई दिस एंड लेट यू नो कि हाउ डज इट वर्क. एंड ऑल्सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस L'Oreal Paris Endless Satin हेयर सेटिंग स्प्रे. क्योंकि मेरे बाल खड़े अभी तो तब भी बैठे हुए हैं, ये ऐसे खड़े रहते हैं. तो आई गॉट दिस बिकॉज मेरे घर में शादी है. लाइक मेरे घर में इन डिसम्बर देयर इज अ वेडिंग एंड दैट्स अ ह्यूज वेडिंग फॉर मी बिकॉज मेरी समवन वेरी क्लोज टू माई हार्ट, उनकी शादी है. सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ वेडिंग ऑल्सो. So yeah, all these sort of things are making me ready for the wedding more than the festive season. Because क्या ही करूँगी यार, अकेले रहती हूँ यहाँ पे. Most of the time I feel so lazy that I don't get up only in festival है तो क्या हुआ, natural normal day चल रहा है. So these are all the products that I got अभी तक in this birthday and festive things. And surely I will show you about the wedding things that I am been shopping, the dress, the jewelry and everything. So stay tuned and comment down and let me know कि आपको किस चीज का review चाहिए. And also if you like such kind of haul videos, I will surely make more for you guys. And yeah, if you like the video, give it a thumbs up, share it with your friends, comment down, and guys please support. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज. Like I love doing this, but I need some support. अगर आप, it really, you know, gives me a feeling to do something more when I see the views बढ़ रहे हैं, that people are liking it. Please इस वीडियो को 100 लाइक तो दे देना यार. 100 लाइक कौन मांगता है, please. And stay tuned for more videos and reviews of all these products. Thank you for watching the video. Bye bye. Stay home, stay safe, be kind to yourself and to others. Love you.